जय गुरु जी की। Jai Guruji. Aarti is about to begin. Would request seniors to please come forward and everyone else to form 4 queues behind them. Aarti would be played only once, so request for Sangat to do Aarti together. Also, after the Aarti, request you not to step on the mats. That is for the Langar Prasad to be kept. Thank you. Jai Guruji.
Jai Guruji Sangatji, please settle down. Request you to be extremely cognizant about your Jal Prashad water bottles. Do not leave them unattended. When it comes to Langar Prashad, if you are not able to consume it, please ask any of the Sevadars and they will pack it for you. Also, please do not step on the mats that is for the Langar Prashad to be kept. February 18th, Saturday, Shivratri and annual day of Guruji Mandir, Toronto. The schedule is 3 p.m. to 6 p.m. That will be Shabad Kirtan followed by Sufi singing by Shivai Uncle. Same night from 10 p.m. till 19th Feb 5 a.m. It's 7 hours mantra jap on Shivratri. So please plan your visit to temple accordingly. कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आइए. गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो सत्संग शेयर करते हैं और जो सुनते हैं दोनों का ही भला होता है. So if you have a satsang to share, please come forward. Jai Guruji, Shukrana for this beautiful satsang. So normally I don't come on Thursdays, but I think Guruji चाहते थे कि मैं सत्संग शेयर करूं. So actually I was not prepared to say anything, but what I'm gonna do is I'm gonna share a little bit about my spiritual journey. And so I actually want to start by telling you, like, during COVID time, I was actually going to these Buddhist meditation classes because Guruji के सत्संग नहीं हो रहे थे उस टाइम पे. And वहाँ पे there's no shabad or music, and you just have to focus on your breath. And so they have these sessions for 1 hour, 2 hour, and I used to sit, and within 10, 15, 20 minutes I used to get restless. And then there I saw this guy. He was meditating for 2 hours at a stretch, and I was really surprised that how can anybody sit just without any music and just focusing on their breath. So I actually went up to him and asked him that how come you are so focused, and he was a very young guy. So I said, how do you have so much motivation? So he said one thing which really shook me, and which actually changed the way I thought and the way I take things. So he said, Ritika, I don't have time. And that really hit me hard, because I realized that's the truth. We all don't have time. I don't want to scare anybody, but this is the truth. We think we have a lot of time, but actually we don't. So यहाँ पे जो शब्द चलती हैं उनमें भी repeatedly यही बोलते हैं कि जो करना है अभी करो. Like if you want to pray, meditate, you want to become a good person, ये time अभी है. हम postpone करते रहते हैं चीज़ों को, कल करेंगे, बाद में करेंगे, हो सकता है वो time ना आए. So इसीलिए the time is now. And मैं जब यहाँ आती हूँ and I see the younger generation coming here, I feel very happy, because मुझे लगता है ये younger generation हमारी country का future है. And इनका like everybody should come here, but when I see them it makes me very happy, because आने वाला time I think is going to be very, very bad. And so when I see the younger people come here, it actually makes me very happy. And I've seen कि कई बार they are actually doubtful कि वो यहाँ आते हैं तो सोचते हैं कि meditation कैसे करना है, and यहाँ पे आके क्या करना चाहिए. So this is for you, and this is for especially those who are actually new to meditation. So actually meditation is very simple. It's just बस ये है कि आपको consistent रहना है. You have to come here, just sit, close your eyes, and Guruji आपको automatically उस zone में ले जाते हैं. And I also want to share something which I learned
a few years back कि meditation हम क्यों करते हैं, and it's a very beautiful thing. So imagine करो कि आप Canada में रहते हो, which is your home, and you are asked to go on a long vacation like for 6 months, और आप पूरा वर्ल्ड टूर करके आते हो, बट बीच बीच में ना आपको वो रेस्टलेसनेस होती है, आपको लगता है कि घर वापस जाना है एंड कुछ मिसिंग है. सो अल्टीमेटली आफ्टर 6 months you come home and then you are happy to be home. So this is what meditation is. Basically we are souls in human form, and our soul is actually seeking, this is not, the earth is not our home. We are here like just for a vacation, we would say. The home is the God's home, where the soul just yearns to go back every single time. And that is why we may have the best car, best clothes, the best of everything, but we always keep missing the God, the love of the God, which is our actual home. So that is why, even if for 10 minutes in a day, we sit with our eyes closed and just connect with Him, our soul feels at peace and the restlessness in our life starts to disappear. Um, so this is what I learned, and I think it's a beautiful thing. And also, sometimes people may think that, when they sit here and meditate, they should know that it's actually a very big seva. Like, suppose like there are 200 people in a room, and out of that 50 people are doing seva. The remaining 150 are doing even a bigger seva, because when you connect to God, when you meditate, it actually creates a positive energy of love, which actually heals every person in this room. So it will heal all of us, every single person. So I'm thankful to all the sevadars and all the people who come here to meditate. And there is one more thing which I want to share, which is actually, which actually keeps troubling me a lot, and it's regarding. I've seen that we come here and we are very kind to each other, but I've seen outside the temple sometimes people can be a little not so kind. So like suppose you're at Starbucks and you see somebody who just snaps at you, and then you just think you would just snap back at them. You would get angry too, but take a moment and actually think that if the other person is just snapping at you for no reason, they must actually be going through some problem. They might be facing something so bad that it is coming out and they're actually snapping at people. So instead of getting angry at them and snapping back, let's change it. Let's be more kind and maybe say 2 words of kindness, or like maybe not say something, but at least don't say be angry in return. And this is what how it should be. We should make this world a better and kinder place for sure. Thank you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत for everything, and thank you for kind. काफ़ी अच्छा सुना है आपने सत्संग. I'm sure it's going to resonate with a lot of people. So I'll just share one small satsang. I've shared this many times. It's one of my favorite satsangs, and I think Guruji wants me to share it. I think a few people are suffering from this, and I'm hoping Guruji will bless them in the same way I was blessed with it. So this is in regards to my back pain. When I was going through, this is going back at least 3-4 years, if not even more. अगर मैं 3-4 बोल रहा हूँ तो ज़्यादा ही होंगे, because time flies. And do we have the second mic? Because this mic's not really good. Can you do something? Sorry. Jai Guruji. Yeah. So in regards to the back, so I was going through this issue with my back, and anybody who's been through back pain, they know it's very, very painful. You're almost like a cripple. And when I was going through that phase, I was a cripple basically. I couldn't even walk to the washroom. I would,
जैसे रिगड़ के जाना and getting out of the bed was a challenge, you know, going to work and everything was basically a challenge. So वही स्टेन चल रहा था and then रात को I go to bed and मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं in my dreams. And dream में क्या मैं देखता हूँ कि I see Guruji in a restaurant, that he walks in a restaurant and he's with somebody, and I follow him back. I follow him inside the restaurant, and the restaurant में he's talking to somebody. वो एक booth style restaurant था, जैसे टेबल थी, जैसे रेस्टोरेंट में booth होते हैं. So they're both sitting and kind of chatting. I have no idea what the conversation was, but they're just chatting. So I go there and Guruji के पैर छूता हूँ जाके एकदम, and then he tells me इथो जा तू. Like, and I was kind of taken back by that and see why is he asking me to leave. And I kind of move back and then I see him get up and the other guy also get up and they walk out of the restaurant. और पीछे का दरवाजा था एक restaurant में. So वो उधर से जाते हैं and then I follow him. And when I follow him, what I see outside is कि एक dock बना हुआ है. Dock in the sense जैसे हम जब boats खड़ी होती हैं, पानी होता है, जो एक platform होता है, that's called a dock as we all know. तो वो dock सा बना हुआ है and there's a boat there and I see him going inside the boat and the other guy with him. So I'm still back क्योंकि उन्होंने मुझे बोला मैं दूर जाऊँ, but I'm still following him. So मैं जाके देखता हूँ पीछे कि क्या हो रहा है वहाँ पे. Then I see him lying on his stomach, basically back facing up, and उनको खून की बोतल चढ़ी हुई है. So I was really taken back by that कि ये क्या हो रहा है and all. And I think at that time I woke up and you know. जब भी गुरुजी के दर्शन होते हैं, जो भी फॉर्म में होते हैं, like we all know the feeling that we get is just out of this world, and I have tears in my eye. I wake up, I know उसके अगर मैं गुरुजी के दर्शन हुए हैं, I share the dream with her, and it was around 2 o'clock in the morning at that time. I go to the washroom and I'm still crippled. Like I'm going to the washroom, बिल्कुल crippled जैसे जाते हैं रिगड़ के, and I come back and I go back to sleep. I wake up at 6 o'clock the next उसी morning में, the alarm goes off. And believe me, Sangaji, like my back pain was gone. Like वो दिन है और आज का दिन है. Like I have not had that kind of back pain ever. And this is going back at least 5-6 years. And maybe Guruji ने जो कष्ट मेरे पे था back का, he took it on himself. But at the end of the day, my back was fine, and it still is. And I just शुक्राना for that. Guruji को कोटि शुक्राना है उसका, and for everything that he does and gives and provides for us. I think we just have to thank him. No matter what troubles we have in our lives, all we can do is thank him, because things can be a lot worse. So, Shukrana Guruji, thank you. जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी. Thank you so much टोरंटो मंदिर में दर्शन देने के लिए. I just landed a few days back only. My son is here on student visa, so I just came to visit him. Came last year. So गुरुजी के साथ तो रोज ही सत्संग होते हैं. I was blessed to have दर्शन बड़े मंदिर के आने से 2 दिन पहले. And I was just shopping, जाके कर रही थी, सामान होता है ना बच्चे के लिए, ये लेना वो लेना. So एक बर्तन की दुकान पे खड़ी हुई थी. So suddenly my husband said कि कल मंदिर भी जाना है और तू जा रही है, तो एक काम कर, लोटा प्लेस करा के ले जाओ श्री वास्ते. ऐसा ठीक है. जैसे उन्होंने बोला, मेरे मन में आया, दिमाग में आया कि बात तो सही कह रहे हैं. कल मंदिर का भी मेरे को बुलावा आ गया. वेडनेसडे मंदिर इज नॉट ओपन फॉर जनरल संगत, सो प्राइवेट सत्संग होते हैं. तो पर दिमाग में गुलशन सी चल रही थी कि हर्ड फ्रॉम द ओल्ड संगत कि अगर किसी को बहुत तकलीफ हो तभी गुरुजी का लोटा ब्लेस कराएं. सो मैं सोच रही हूँ बड़ी परेशान कि भाई मेरे बेटे को बैकेक की प्रॉब्लम हो रही है. अभी आपने बैकेक बोला तो मुझे याद आ गया, जब से टोरंटो आया काम बहुत कर रहे हैं, दे डोंट हैव द हैबिट टू वर्क. सो बैकेक हो रही है, बट इतनी भी नहीं हो रही है, मैनेजेबल है, मेडिसिन से ठीक हो जाती है. बट उन्होंने बोल दिया लोटा ब्लेस कराना, तो मन में दुखी चल रही थी. मैं क्या करूँ, देखो जैसे आपकी मर्जी. आई वॉज इन साइड द शॉप. आई आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ लोटा. वहाँ बहुत सारे लोटे पड़े थे. मैंने कहा छोटा लोटा लेना. लोटा लिया, लोटा का ढक्कन नहीं.
आई सेड लोटा विदाउट कवर तो नहीं ले जा सकती। मैंने कहा, मैं उससे बड़ा बहस कर रही थी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कह रहे नहीं मैडम, हमारे यहाँ आते हैं लोटे के ऊपर वो नारियल रखने वाले, तो नहीं है। तो मुझे एकदम हिंट आ गया, मैं कहा गुरु जी की मर्जी नहीं है लोटा ले जान दी, चलो छोड़ो। आई वेंट टू द अदर शॉप टू बाई सम मोर स्टफ, देयर आल्सो द सेम स्टोरी। लोटा दिखा तो मेरा स्टाफ वो लगा, दीदी लोटा मिल गया। मैं कहा चलो, कैप का है, कवर का है? वो नहीं है जी, यहाँ पे भी लाली लोटे हैं। मैं कहा कमाल हो गया यार गुरु जी, लोटा भी दिखा रहे हो, कवर नहीं दिखा रहे हो, की चाह रहे हो तुसी? फिर मैंने मेड अप माई माइंड, आई थॉट कि नहीं मर्जी गुरु जी की, लोटा ले जाने की कोई नहीं। थोड़ी देर बाद थर्ड शॉप पे गई, सारी शॉपिंग करने के बाद उसने फिर देखा लोटा, दीदी लोटा भी है, ढक्कन भी है। मैं कहा ले गुरु जी हुण तुसी की चाहते हो भाई? आई वॉज कन्फ्यूज। मैं कहा अच्छा ठीक है, हम मिल गया तो लेना तो ज़रूर है, ले लेता लोटा। आ गई घर, लेट हो गए थे, रात को खाया, फिर सो गए। लेटे लेटे नींद में ख्याल आया, क्योंकि दैट ऑन दैट वेरी डे आई गॉट टू नो माई डॉग, माई लिटिल वन, my loveliest, so he got unwell suddenly, and doctor was suspecting him, kind of a little tumor on his front limb, and they were suspecting of skin cancer. तो I was very upset, और मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि मैं तो टोरंटो जाना था, पर फिर मैं कैंसिल करूँ? तो सेड कि नहीं आप कैंसिल मत करो, हम इसकी कल ही सर्जरी करते हैं, एंड एक दिन में ही एडमिट होगा और सब करके। और मुझे ध्यान आया, मैं कहा गुरु जी ने लोटा मेरे पुत्र वास्ते नहीं दिलाया, मेरे छोटे पुत्र वास्ते दिलाया कि लैके जा एनू ब्लेस करा, क्योंकि इस वेले ओनू लोड है। और फिर मैं नेक्स्ट डे मंदिर गई, जाके लोटा ब्लेस कराया, उसका जल उसको पिलाती हूँ। दो हमारे थोड़ा हिंदू शास्त्र में बोलते हैं, कई लोग जानते भी होंगे, कि डॉग्स वगैरह को, कैट्स को, पेट्स को वो बोलते हैं स्पेशली मंदिर के पास मत लाओ, और वहम करते हैं। बट मैं जब भी घर में दिया जलाती हूँ गुरु जी के आगे, मेरा पेट मेरे साथ ही चलता है, जय गुरु जी करके वो अपना पूरा सिर हिलाता है, नेक हिलाता है। सो बेबी दैट लोटा वाज फॉर मी और नॉट फॉर यू, ऑफ कोर्स। फिर दूसरा सत्संग फिर मैं आ रही थी, तो आई एज माई सन, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो प्रॉब्ली he booked an extra baggage for me so that I should not get any trouble and कोई hassle ना मुझे एयरपोर्ट पे। मैंने सब कुछ कर लिया, पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, and बड़े आराम से well in time I reached the airport thinking that because I'm going alone और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। 26 जनवरी की रात थी, वैसे भी बहुत चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे, बट सब कुछ करा के वहाँ पे उन्होंने स्टाफ ने मुझे रोक लिया एयर इंडिया के कि आपका जो एक्स्ट्रा बैगेज आपने पे किया है वो यहाँ दिख नहीं रहा हमारे सिस्टम पे। मेरे पास सब प्रूफ था, मैंने दिखाया, बहुत देर चलती रही बहसबाजी। आई कॉल माई कज़न हु बुक द टिकट, सब कुछ करके कर लिया, कुछ नहीं। 1.5 घंटा बहुत हासिल हुई, और मैं तंग आके मैं गुरु जी तुसी की चाहते हो, मैं टोरंटो जावा कि नहीं जावा, क्यों मैं वापस ही लौट जाऊँ, मैं अब नहीं जाना मेरे को। और मैं मन में यही आ रहा था, मैं गुरु जी पता नहीं, मैंने सुना है मैं अपने टाइम बाद ट्रैवल कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ, पर मुझे आपको साथ ही लेके जाना है। सो आई गॉट गुरु जी की पिक्चर framed, which my husband got it done, and I kept in the mandir for 2 days at home, and I didn't realize that जैसे कहते हैं ना गुरु जी दिखाते नहीं, जो उन्होंने को दिखाना होता है वही दिखाते हैं। मैंने खुद नहीं रखी, 2 दिन मैं उस पर दिया भी करती रही, पर मुझे नहीं पता था कि इसमें ग्लास लगा हुआ है। फिर एनीवेज एयरपोर्ट पे बहुत परेशान हुई, फिर उसके बाद क्लियर अप भी हो गया, उनके सिस्टम में नहीं आ रहा। मैं कहा गुरु जी इतना तंग करोगे, इतना परेशान करोगे, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। एयर इंडिया का स्टाफ भी बहुत घबरा गया, और फिर बाद में उन्होंने व्हेन दे फाउंड इट और इट वाज ऑन देयर सिस्टम, इट वाज कमिंग अप, कुछ था टेक्निकल एरर। फाइनली उन्होंने मुझे व्हील चेयर करा के दी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, तो व्हील चेयर करा के दी, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सिक्योरिटी मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। सब कुछ करा के फिर एक अरेंजमेंट इन्होंने 2 लोग बंदे साथ में भेजे, सब कुछ करा के फ्लाइट पे बैठा दिया। मैं कहा चलो गुरु जी साथ चल रहे। फिर मैं दिमाग में वो था, टिकट्स फॉर वेरी एक्सपेंसिव, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा हो नहीं पाता, हम हैं तो इंसान ही, पर बड़ी मर्जी थी कि गुरु जी साथ वाली सीट पे बैठ के चले। एंड गुरु जी की मर्जी, उन्होंने पूरी रो मुझे दिलवाई है
कि आराम से लेटी हुई जा। मैंने उनको साथ में हैंड बैगेज में रखा, उनसे लेके आई थी, रख तो सकती नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड यूज, एंड उनको सीट पे साथ वाली पे रखा। थोड़ी देर बाद गुरु जी को कहा मुझे थोड़ी नींद आ रही है तो थोड़ा आप पास से हो जाओ, मैं ज़रा साथ में लेट भी जाती हूँ। यू नो हाउ वी आर। सो मैं सिर रख के लेट भी गई, बड़े आराम से मैं लेके आई। The moment I landed over here and went inside घर आके पहुंची तो बैगेज खोले तो सबसे पहले मैंने हैंड बैग से गुरु जी का स्वरूप निकाला, which was packed with bubble wrap and very well packed। जैसे ही वो खोला उसमें शीशा टूटा हुआ। मेरे को तो ऐसे सच वट पड़ गए बुरी तरह। तो पहले तो अपने अंकल पे चढ़े। अंकल आई थिंक जो भी जाते हैं गुरु जी, मालूम हुआ कि आप सबको अंकल बोलते हैं, तो मेरे अंकल मीन्स मेरे हस्बैंड, कि भाई इन्होंने शीशा क्यों लगवाया था। उनको पता नहीं था कि मैं जा रही हूँ टोरंटो, तो इसको लैमिनेट कराना था। पहला गुस्सा तो इस बात पे आया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सुबह उठते ही वहाँ रात को हो रही होगी, क्या लड़ना। एंड माई सन वॉज वेरी अपसेट, उसके फ्रेंड्स वगैरह सब आए हुए थे एंड ही वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि नोज कि मम्मा का गुरु जी के बगैर गुजारा नहीं है और ये फ्रेंड टूट गया तो मम्मा तो बहुत अपसेट हो गई है। एंड इवन आई वॉज अ लिटिल, फिर मैं ऐसे भी गुरु जी थी, कोई कुछ तो कुछ होएगा, तो मैं कह कोई बात नहीं, चलो उसका क्लास निकाल देते। फिर मम्मा आई गेट यू फ्रेंड, डोंट वरी, डोंट वरी। फिर मैं मन में उलझन तो होती है, देखो आप जो मर्जी कहो, हम हैं तो इंसान ही, हमें फिर भी सवाल आते ही हैं। मैंने थोड़ा शाम हुई था, कॉल्ड अप इंडिया टू माय वन ऑफ माय फ्रेंड आंटी, कज़न आंटी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया था। उनको मैंने कॉल किया, मैंने बताया मैं क्या ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। कह रहे गुरुजी ने बड़ी परीक्षा ली थी और आपके साथ कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने ले लिया है, तो आप सोचो भी मत। वो ग्लास का फ्रेम, मैं कहा आई वाज सरप्राइज कि मुझे वो ग्लास फ्रेम इंडिया में क्यों नहीं दिखा, जब मैं 2 दिन उसको मैंने मंदिर में रखा था। अगर मुझे वही नजर आता तो मैं उसको वही चेंज करा देती कि भाई मुझे ग्लास फ्रेम नहीं लेके जाना, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। पर गुरुजी ने नहीं दिखाना था और उन्होंने साथ ही आना था, मेरे सीट पे बगल में बैठ के आना था और मुझे किसी बहुत ही बड़े घर से बचाना था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, यू आर एवरीवेयर। एंड आने से कुछ दिन पहले ही आई गॉट टू नो, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स काफ़ी सारे हैं गुरुजी के, वहाँ पे सडनली आई गॉट अ मैसेज, टोरंटो ग्रुप के मंदिर की फोटो, तो और किसी ने उसमें डाला हुआ था संगत जी ने, तो मैंने फौरन उनको कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा अरे वाह, गुरुजी को पता मैं टोरंटो आ रही हूँ। I just contacted that uncle and asked them for the address and also they've sent me the link and address और timing पूरा उन्होंने भेजा। So thank you so much गुरुजी। आपने जब जहाँ जिसको बुलाना होता है आप बुला ही लेते हो, किसी भी तरीके से बुला लेते हो। आई हैव लोड्स ऑफ सत्संग, वो पूरी रात निकल जाएगी तो खत्म नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी पैर रखना। 2 लाइनें। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है सॉरी गूज़बम्प्स आ रहे, हर धड़कन बंदा परवर शुक्रिया, हंस के मुझको अपनी जिंदगी कर लिया शामिल, हमें आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, हमें ये दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी फॉर लिसनिंग माय सत्संग। यहाँ बैठे बैठे मेरे को हो रहा था अंदर से कि मुझे सत्संग सुनाना है, तो ये मैंने नहीं कराया, ये गुरु जी ने मुझे बुला के कराया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।
मुझे बस गुरुजी को एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना बोलना है, हर छोटी सी छोटी विश फटाफट पूरी करने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। अभी लंगर प्रसाद शुरू होगा। वो रिक्वेस्ट अगेन नॉट टू स्टेप ऑन द मैट्स, दैट इज फॉर द लंगर प्रसाद टू बी केप्ट। एंड if you are not able to consume langar prasad, please ask any of the sevadars and they will pack it for you. आज के सत्संग के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।